Hello officers, this video is the first video of the banking awareness series and this video will be about the banking history of India. And शुरू करने से पहले do subscribe our channel and press the bell icon for the future notification. First Bank of India is Bank of Hindustan established in 1770 जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था. First bank which particularly managed by Indians is Oudh Commercial Bank. The first presidency bank, the Bank of Bengal in Calcutta, established on 2nd June 1806. और कितने कैपिटल में एस्टेब्लिश हुआ था? ₹50 लाख. The second presidency bank, the Bank of Bombay in 1840, and the third presidency bank, the Bank of Madras in 1843. And all these presidency banks were established with capital ₹50 lakh. The first joint stock commercial bank. Joint stock means the bank that is owned and controlled by the shareholders is your Allahabad Bank and जिसका present headquarter कोलकाता in West Bengal. ये कब establish हुआ था? In 1865. First bank which started with Indian capital, Punjab National Bank in 1894 जिसका हेडक्वार्टर लाहौर जो कि अभी पाकिस्तान में है हुआ करता था. अभी the headquarter of Punjab National Bank is New Delhi. India's fully indigenous bank, Central Bank of India in 1911. Indigenous means all the management, investment and staff are Indians. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक ही वो बैंक है जिसका इनॉग्रेशन महात्मा गांधी जी ने किया था. कब किया था? इन 1919 पे. इन 1921 द थ्री प्रेसिडेंसी बैंक मतलब द बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड द बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर एक नया बैंक का स्थापना किया जाता है जिसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. एंड this Imperial Bank of India which was later nationalized and renamed as the State Bank of India कब? in 1955. एक अलग से वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. In April 1935 the RBI was established under RBI Act 1934. RBI and RBI Act 1934 and Banking Regulation Act 1949. ये तीन टॉपिक के बारे में हम अलग अलग से वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. On 1st January 1949 the RBI was nationalized and the government became the 100% sole owner of RBI. The Banking Companies Act 1949 was enacted by RBI, which was later renamed as Banking Regulation Act 1949, which gives RBI power to license banks, supervise appointment of board and management, regulate operation of bank. एग्जाम में कई बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि अंडर व्हिच एक्ट द आरबीआई गिव्स लाइसेंस टू द बैंक. तो आंसर होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन. नेशनलाइजेशन का जरूरत क्यों पड़ा? बैंकिंग सिस्टम को हर एक सिटीजन के पास पहुंचवाने के लिए बैंक्स को नेशनलाइज किया गया. ये कब हुआ था? ऑन 19 जुलाई 1969. इसी दौरान पीएम कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी. The Banking Companies Acquisitions and the Transfer of Undertaking 1969 Act was passed. And 14 banks were nationalized having paid up capital of ₹50 crore. And these 14 banks are Allahabad Bank जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता, बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे, कनारा बैंक बेंगलुरु, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, देना बैंक मुंबई, इंडियन बैंक
Chennai Indian Overseas Bank, Chennai Punjab National Bank, New Delhi Syndicate Bank, Manipal, UCO Bank, Kolkata, Union Bank, Mumbai एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता। अभी कुछ बैंक जो कि मर्ज हो चुके हैं उसके बारे में अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन। सेकंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन कब हुआ था? अप्रैल 1980। इसी दौरान देश के पीएम कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। 6 banks were nationalized having paid up capital of rupees 200 crore and these 6 banks are आंध्रा बैंक जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद, कॉरपोरेशन बैंक जिसका हेडक्वार्टर मंगलुरु, पंजाब एंड सिंध बैंक न्यू दिल्ली, न्यू बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली एंड विजया बैंक जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु, कर्नाटक। New Bank of India was merged with Punjab National Bank in 1993. A new phase of banking started from 1991, that is after liberalization policy. उसी दौरान देश के पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। In 1991, Narasimha Committee formed by Reserve Bank of India gave recommendations on entry of a private bank and RBI gave license to 10 private banks, and out of them the important banks are the Axis Bank which got license in 1993, ICICI Bank in 1994 and HDFC Bank in 1994. In 1998, Narasimha Committee again recommend the entry of private banks, and Kotak Mahindra Bank got license in 2003, Yes Bank in 2004, IDFC First Bank in 2015. Earlier it was IDFC Bank and later it was merged with Capital First. Now it was renamed as IDFC First Bank and Bandhan Bank in 2014. In 1st April 2019, Vijaya Bank and Dena Bank merged with Bank of Baroda. From 1st April 2020, the 10 public sector bank merged with 4 different entities. Now the number of public sector bank reduced to 12 from 27 in 2017 in India. 2017 में ये 27 हुआ करता था, अभी फिलहाल 12 हैं। 11 नेशनलाइज्ड बैंक एंड 1 इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी जान लेते हैं कौन सा बैंक किसके साथ मर्ज हुआ था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया merged with Punjab National Bank, Syndicate Bank merged with Canara Bank, Andhra Bank and Corporation Bank merged with Union Bank of India, and Indian Bank merged with Allahabad Bank. Now some important facts. The bank which introduced ATM in India is HSBC Bank in 1987. And the abbreviation of HSBC Bank is Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. The bank with highest number of ATM, yes, obvious, State Bank of India. The first bank to open the overseas branch is Bank of India in 1946 in London. The oldest existing bank, Allahabad Bank. The founder of Punjab National Bank is Lala Lajpat Rai. The first bank with ISO certification is Canara Bank.
ISO refers to the International Organization for Standardization. Okay, India's first talking ATM launched by Union Bank of India at Ahmedabad, Gujarat. Saving account system in India started by the Presidency Bank in 1833, the first bank to introduce the check system. Bengal Bank in 1784, the first bank to provide internet banking is ICICI Bank. ICICI Bank full form is Industrial Credit and Investment Corporation of India. The first bank to introduce credit card is Central Bank of India, and the first bank to provide mobile ATM is ICICI Bank. ओके, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई पे है. नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर कुछ भी डाउट हो या आपको लगता है कि कोई एक पॉइंट हमसे छूट गया है तो योर वैल्यूएबल कमेंट इज हाईली अप्रिशिएबल. थैंक यू.